Hello guys, welcome back to my channel Evolve with Jasmine. Today we have Ruchika Garg. She's a emotional wellness therapist. So let's welcome her by saying hi to her in a chat box. So hello Ruchika. I hope you are Hello, doing Jasmine. well. I am. I hope you are too. So same here. So Ruchika, before we proceed further, please tell people about yourself, like what you do, how why you do all those things. Thank you. Yeah. Hi, everyone. If you are listening to me, I'm glad you're here. My name is Ruchika. I am an emotional wellness therapist, and for the last 6 years, I have been working with adults to help them process very difficult emotions, to help them release past traumatic experiences so that nothing comes in between you and your dreams. So, the reason I talk about emotions is because what we feel paints how we behave, paints our behaviors, paints our actions. And if every time you feel you're wanting to take one step forward, but you feel uncomfortable, so something happens and then you take two steps backward. And that's the struggle that you are experiencing, aage piche, aage piche. That's when I come to the picture and help you understand what is the root cause behind why you are experiencing this. And I help you change the pattern for you. So, in short, this is what I do. And recently, I am working with entrepreneurs, therapists, coaches, HNIs, and these are the kinds of people I work with, and they are happy to experience a lot of emotional freedom and trauma release, and then they are able to go ahead in their life with a lot of momentum and speed, because Right. nothing's pulling them back. So, this is the core of what I do, Jasmine. थैंक यू सो मच ऋषिका. I hope guys आप लोग को पता चल गया होगा who is she and how she is doing. So Ruchika, what inspired you to be a emotional wellness therapist and coach? बहुत लंबा बढ़ जाता है but still it's like been so long. But Yeah. I really want to know the reason कि आपने ये लाइन ही क्यों चूज करी. Why emotional wellness? It started off when I was doing my MBBS. And first 6 months of doing MBBS, I realized it was a huge mistake because I was not resonating with the subjects. So I dropped out of MBBS, consulted a career counselor because I was absolutely clueless. And she did my assessments and said that I should pursue psychology. So that's how my journey into this field started. And the reason I am an emotional wellness therapist today and who specializes on trauma and inner child work is because for 9 years, I was in a situation where I was brainwashed into a cult. And those 9 years were extremely difficult and damaging. And when I came out of that, I had to rebuild myself completely to be who I am today. I have made that journey of working with extremely difficult emotions, working with low self worth, working with thinking I am, mind my words, that I'm shit. And I've had that whole journey where I started off from that space where I felt like nothing, and now I'm here. So I am helping others experience the same freedom that I have experienced for myself, even if life was difficult, and even if I thought I would never come back to enjoy life, to express my ambitions and passions, and to do what I'm doing today. So, this is the main reason why I do this work today. Because I know that it's a beautiful process. It's a difficult process too, but it's beautiful and it really works and it can completely change how you think and feel about yourself. And when it comes to emotions, emotion is a word that creates a spark in my eyes because how we feel affects everything. If you are ambitious but you're not feeling good, आप उस ambition का कुछ नहीं कर पाओगे. So your feelings are important, your emotions are important. And I am an expert when it comes to understanding emotions, an expert in helping people to really get through with difficult emotions, how to handle them. So many reasons why I do this work, but this is on the table for you now. This is why I do it. Really amazing, Ruchika.
आई हैव बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, रुचिका एक्चुअली हमारे साथ कुछ लेडीज मतलब गर्ल्स भी हैं जो हमारी परमानेंट ऑडियंस है, उर्वशी, कृतिका, मिताली, Tanisha, and they all are like superb. They join each and every session, and जब वो लोग आते हैं हाय लिखते हैं तो आई ऑलवेज फील लाइक टू ऐड वैल्यू. हम लोग आगे प्रोसीड करें उससे पहले आप एक स्पेशल सेमिनार करते हो, वेबिनार करते हो फॉर गर्ल्स. आई जस्ट वांट कि आप Yeah. थोड़ा सा उसके बारे में इन सबको बताओ. Okay. So, hi, girls. I love to see women audience because I mostly work with women. Right. So, what Jasmine is talking about is a very special workshop that I do. It's a 2 hour workshop that I do for women only that will help you understand why you have a womb. So, it's about understanding the power, the emotional and spiritual power of the womb in addition to just having periods or making babies. तो आपके पास वो womb है वो actually आपका power house है. But how to understand that, how to connect with the womb, what is the womb really, and how to make use of that, I do in that workshop. Next time I do that workshop, I will definitely tell Jasmine to announce it for you guys, and I'll be happy to have you there. And in addition to the workshop, some highlights that I will tell you that will really inspire you to attend it is number one, decoding period pain. Everybody says period pain is normal, सबको होता है. Just because सबको होता है does not make it normal. How to understand why period pain happens and how to work with it. Number two, PMS. PMS is a joke for many people. If you're not feeling well, people just say you are PMSing. But that's not the way to look at it. What is the science behind PMS? Why do we feel that way during PMS? What exactly is your body trying to tell you? What are your emotions trying to tell you? So I address all of this in that workshop. So next time I do it, you will know about it. थैंक्स रुचिका. गाइज मैंने पर्सनली ये अटेंड करी है एंड वी विल डेफिनेटली आस्क रुचिका टू डू इट फॉर माय ओन ऑडियंस. अगर आप सब लोग इन होंगे जस्ट टाइप वाई इन येस बॉक्स एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी यूजर कि आप अपने फैमिली में जो फ्रेंड्स हैं, लड़कियां फ्रेंड्स हैं, जो 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 भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आप ये वाला देना चाहते हो एज अ गिफ्ट, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. सो प्लीज डू टेल दैट पीपल कि आप आके ये चीज़ ज्वाइन करो so that they will get best of their life, right? So before, चलो रुचिका, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस वैल्यू एज वेल. अब रुचिका मुझे आपसे ये जानना है, लाइक हम लोग बोलते हैं रिक्लेम योर इमोशनल वेलनेस, राइट? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने पास्ट लाइफ में किसी ना किसी ने किसी टाइप का ट्रॉमा ज़रूर देखा होता है. Past, when you say past life, you're meaning in the past, like childhood or यस, whenever. इन द चाइल्डहुड और समवेयर क्या कहते हैं कि पास्ट में देखा है जब कभी ऑफिशियल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती है कि जिससे हम लोग बाहर नहीं आ पाते. सो हाउ Right. यू कुड हेल्प देम, कैसे आप हेल्प करते हो कि वो लोग इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के ही एज अ पास्ट और आप आगे आ सकें. Okay, good question. So when it comes to the past, it's very easy to say कि ये past में है, इसको पीछे छोड़ दो. It's very normal for everyone. You said just like you said, and I'm glad you said it because it's giving me an opportunity to explain that this is exactly not how it works. Now imagine that there is a person who's experienced a lot of emotional pain. Let's say in the last 1 year, and this person talks to her friend and the friend says वो हो गया ना उसको पीछे छोड़ दो अब आगे बढ़ो. What are you actually saying to your friend here? आप उसको ये बोल रहे हो कि listen, what you're talking about is negative. Let's not talk about negative, be positive. आपके intentions अच्छे ही हैं. आप उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हेल्प करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. How I work, because I am an expert with emotions, is when somebody is stuck in the past, it's important to understand from an emotional and spiritual perspective. Like, let's say that this is a bottle of water, right? You can't see it because of the background, but okay, this is a bottle of water. ये आप हो, इसके अंदर जितना पानी है वो आप हो, ठीक है? That is your sense of being. Now in the last 1 year, whatever happened, that impacted you and it is staying with you, which means a part of this water, let's say 20%, is not in this bottle with you today. It is there in the past.
वो आपके साथ अवेलेबल होता तो आपको उतना फील ही नहीं होता, तो आपको लगता कि कोई बात नहीं, चला गया। बट इट्स नॉट हियर विथ यू टुडे, इट इज इन द पास्ट। माई वर्क इज टू गाइड यू टूवर्ड्स द पास्ट। अंडरस्टैंड कि वो जो 20% आपका हिस्सा है जो पास्ट में स्टक है, उसको एक्चुअली क्या फील हुआ है। In fact, you can do this with yourself in your own ways. Unless the past is something that's extremely traumatic for you, then don't do it yourself. Do it with a skilled trauma informed therapist. But if it's a small thing, then you can connect with your past because your past needs connection. अगर आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ दोगे तो आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका 20% हिस्सा पीछे आप छोड़ रहे हो। तो पास्ट को पीछे नहीं छोड़ना, पास्ट में आपका हिस्सा जो फंसा हुआ है उसको प्रेजेंट में लेके आना है, सो दैट दैट पार्ट ऑफ यू आल्सो फील्स दैट ओके, इट इज सेफ फॉर मी टू बी इन द प्रेजेंट नाउ। So how to build that connection in between the present you and the past you is the main work that I do, and that is something that is done in a very safe manner. It is done in a step by step manner. द कोर इज, आपका जो पास्ट में हिस्सा है उसको क्या फील हुआ, उसको उस टाइम क्या चाहिए था जो उसको नहीं मिला, और आप, और क्योंकि उसको जो चाहिए था जो उसको नहीं मिला और कोई तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, वो सिर्फ आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो व्हेन यू गिव दिस पास्ट वर्जन ऑफ यू द लव, द सेफ्टी दैट इट नीड्स, and this 20% feels that okay, finally somebody listened to me, somebody did not force me to be positive, somebody actually sat with me, then that 20% will say that okay, now I'm done, now I'm ready to come to you. So then your bottle will receive the 20% and then you will feel more full, you will feel more complete. प्रेजेंट मोमेंट में आने की क्षमता तब होती है जब आप प्रेजेंट में आने के लिए सेफ फील करते हो। That is when you feel that okay, now I'm actually in the present. So this is how it works. This I hope I was able to explain it clearly, and if the audience has any questions relating to that, you can put it and I'll answer at the end. यस गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट है, आप अपना चैट बॉक्स में डालना शुरू कर सकते हो। वी विल टेक दिस क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ टाइप वाई इन अ चैट बॉक्स, क्योंकि हमें आइडिया तो लगे भाई कितने लोगों को पसंद आ रहा है, कितने नहीं। प्लीज़, कहते हैं ना, वो अभी मैं ये तो नहीं बोल सकती कि शाउट करो, ये करो, क्योंकि आई वोंट एबल टू हेयर यू। तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में रश कर देना चाहिए कि कैसा चल रहा है आपका सेशन। Anyways, Ruchika, we are getting so much information in this thing. People really loving your session. So, रुचिका, जैसे आपने बोला कि yes, it's very positive बोलने से नहीं, we have to do it something to get out of all this trauma. तो आपने एक चीज़ तो श्योर कर दी है कि हम लोग जो हमारे लाइफ के ट्रॉमास हैं उनसे बाहर आ सकते हैं, पास्ट की से निकल के प्रेजेंट में आ सकते हैं। हाउ यू आर हेल्पिंग पीपल इन द सेम, मतलब आप कैसे कराते हो, कैसे सेशंस होते हैं आपके, हाउ डू यू रियली हैंडल ऑल दोस थिंग्स? सो आई वर्क ओनली विथ पीपल जो अपने इमोशंस को फेस करने के लिए समहाउ रेडी है। सो मैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज दैट इज माई वर्क। ओके, so let's say that somebody is feeling sad, okay, and they may or may not know why they are feeling sad. Let me give you a better example. Actually, this is one of my clients who is a very well renowned high profile coach. She's a business coach, so she coaches businessmen, entrepreneurs, all of that. The problem she was experiencing is that she was not able to maintain a work life balance. Now it sounds like a very normal problem कि सबको होता है, big deal. But her problem was creating a lot of emotional pain inside of her. कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, काम कर रही है तो एकदम पीक में जाके कर रही है and then it comes down. So it was always up and down, up and down, up and down for her. So I'll give you an example of how I worked with her and how she's feeling today. How we started off is by understanding what she was really feeling, understanding her patterns, understanding what were her triggers, किन चीज़ों से वो इमोशनली बहुत हाइप हो जाती थी, तो अब खुद को मैनेज नहीं कर पाती थी, एंड देन शी वुड एंड अप ओवर रिएक्टिंग एंड देन लेटर रिग्रेटिंग कि ये मैंने क्यों किया। सो वंस वी अंडरस्टूड हर पैटर्न्स, एक चीज जो हमें समझ में आई इज दैट फॉर हर वर्किंग
Consciously, the present version of her consciously wanted to work, wanted to make it really big. But there was an unknown past version of her which was feeling scared कि अगर मैं उतना ग्रो हो गई, क्योंकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है वो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंटली काम करके वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते करते उतना ग्रो हो गई, तो मेरे लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका सपोर्ट चला जाएगा. शी डिड नॉट नो अबाउट दिस प्रॉब्लम, but it was eating her system inside out. Through the sessions, she realized that, oh, अगर मैं कंसिस्टेंट हो गई, अगर वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, तो मुझे आगे बढ़ने से तो कुछ रोकेगा ही नहीं. लेकिन अगर मैं आगे बढ़ गई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम मुझे अपनी लाइफ में चाहिए नहीं. सो सबकॉन्शियसली वो जब भी आगे बढ़ती थी वो पीछे आ जाती थी, फिर आगे बढ़ती थी फिर पीछे आ जाती थी. दैट्स वाई ओवरवर्किंग, नॉट पेइंग अटेंशन टू फैमिली, एंड देन फीलिंग गिल्टी कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो काम एकदम साइड में, एंड देन ओनली फैमिली टाइम. सो वर्क लाइफ बैलेंस वाज लाइक दिस, totally up and down, totally up and down. So when she understood that this is my subconscious fear, that was step one. Step two was how to connect with that inner child who's carrying the fear. उसके लिए एक पूरा intervention process होता है. So we connected with the inner child. We made the adult, which is her present version, speak with the inner child, which is the past version with the fear. And then the child started to speak. कि मुझे इस चीज़ का डर है, मुझे इस चीज़ का डर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बचपन में कभी ऐसा हुआ था उसके साथ. तो डर हम फालतू इमेजिन करके क्रिएट नहीं करते. हमें किसी चीज़ का डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने उस डर के कॉन्सिक्वेंस को पहले फेस किया हुआ है. वो कॉन्सिक्वेंस हम दोबारा चाहते नहीं, तो वो करने से हम डरते हैं. सो व्हेन द अडल्ट felt empowered to speak with the child, and then the child, dara hua child, started to feel safe with the adult, and then slowly the child is also feeling happy and safe, and then the adult and child are coming together. So the child is merged with the adult now because the fear has gone. That is when she was able to consistently go forward, create a work life balance, and do everything that she had to do to move ahead. क्योंकि अब वो डर नहीं है कि ओहो सपोर्ट छूट जाएगा. So this is a good example. I hope it made sense. Yeah, it's really making sense. Lot of sense actually, not sense. क्योंकि रुचिका कहते हैं ना कि आज जो बातें करके एक चीज़ और भी समझ में आ रही है कि अगर हम कहीं न कहीं स्टक हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है जिसका ट्रीटमेंट बहुत Yes. इम्पोर्टेंट है. सो Yes. गाइज़, अगर आप लोग एग्री हो तो प्लीज़ बताओ कि आप लोग को कहाँ-कहाँ पे हेल्प चाहिए. स्टार्ट रेज़िंग योर क्वेश्चंस, क्योंकि विदाउट क्वेश्चंस हमें पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे फ़ील कर रहे हो. आपको कहाँ पे सपोर्ट चाहिए, और जहाँ पे अगर सपोर्ट चाहिए तो हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं. सो प्लीज स्टार्ट टाइपिंग क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स. सो रुचिका, अभी नेक्स्ट आप हमसे क्या करवाने वाले हो? आई एम रियली एक्साइटेड. So when it comes to, okay, this is the most beautiful part. When we say reclaiming your emotional freedom आपका end result है. But let's talk a little bit about what exactly is emotional freedom. So I would like to ask you, Jasmine, आपके हिसाब से अगर आपको कोई पूछे कि जब आप इमोशनली फ्री हो तब आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे? या कोई चीज बिना इमोशंस की तो एक्सप्रेस कर ही नहीं जा सकती, आई एम बिकॉज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग वी. इमोशनल फ्रीडम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशनल डेथ. इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. आई नेवर थॉट अबाउट इट, एग्जैक्टली. सो सीरियसली. लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट ये जो टॉपिक है इमोशनल फ्रीडम, उसका मतलब क्या है, देन वी विल गो टूवर्ड्स इट. ठीक है. इमोशनल फ्रीडम मीन्स दैट इमोशनली यू आर फ्री. फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंसेस के लिए आप फ्री हो गए हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप जो कर रहे हो करते जाओ, आप चिल होके रहो. फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स नो फाइनेंशियल टेंशन. Emotional freedom means no emotional tension, which means does not mean that you will be happy all the time. No, that is a wrong promise that I would be making. Emotional freedom does not mean आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि life will happen to you. Life happens to everyone.
आप आज सुखी हो, कल दुखी होगे। Our loved ones, something happens to them. We can't be happy in those situations. तो जो लोग कहते हैं हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप सोचो कि आपके घर में कोई बहुत बीमार है, बहुत सिचुएशन खराब है और आप बहुत खुश हो। That's not healthy, right? So emotional freedom means having the freedom to experience all the flavors of emotion without crashing down. आप अगर बहुत खुश हो तो वो फुल फ्रीडम के साथ एक्सपीरियंस करो। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप दुखी हो, गुस्सा हो, डिसअपॉइंटेड हो, उसको भी आप एक्सपीरियंस, वो फ्लेवर भी आप एक्सपीरियंस करो बिना उस चीज में फंसे। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम में भी तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, हमेशा तो आपका कर्व ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो, यू विल नो हाउ टू मैनेज द डाउन्स। Emotional freedom is the same way. Ups and downs will happen, but how you get through that without really getting stuck with that experience, that is emotional freedom. So it's like आप लाइफ में सॉल्ट टेस्ट कर रहे हो, शुगर टेस्ट कर रहे हो, सावर टेस्ट कर रहे हो, बिटर टेस्ट कर रहे हो, लेकिन कोई टेस्ट आपको बीमार नहीं कर रहा। आप सब कुछ टेस्ट करके आगे बढ़ रहे हो। So emotions are like spices. You have to get a taste of everything that makes your life rich. That Right. is emotional freedom. Is that clear now? True. Yeah? Okay. गाइज आप सब लोग को ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को यहाँ तक क्लियर है कि वो रुचिका इज ट्राइंग टू से इमोशनल फ्रीडम का मतलब क्या है? जस्ट टाइप वाई इन ए चैट बॉक्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये यहाँ तक हम लोग जो भी बात कर चुके हैं, यू आर क्लियर विद ऑल दोज थिंग्स. Let's wait, Ruchika, for a minute. So, meanwhile, we will answer some questions. Then, grow up said, Thank you for the comment, whoever has commented this. just a second, guys. I'm facing some glitch. Okay. Grow up is saying, Jasmine, please alternate days पर live आओ ना यार. Grow up, I'm trying to do same. मैं इन्हीं चीज़ों पे work on कर रही हूँ. So we'll definitely, if सब लोग agree होंगे, we will meet only 3 days, 3 days live in a week. तो अगर आप सब लोग को सही लग रहा है तो आप लोग प्लीज बता सकते हो. So coming to another question, that is move on breakup. Good question. So when it comes to breakups, the most important thing in understanding how to move on is not pressurizing yourself कि मुझे इतने टाइम पे move on होना है। Hmm. You have to give yourself enough love, respect and dignity कि आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप बहुत अच्छे फेज से नहीं गुजर रहे हो। अगर आपकी कोई फ्रेंड अच्छे फेज से नहीं गुजर रही है, आप उसको थोड़ी बोलेगी अभी तुरंत से ठीक हो जा। You will give that love and security to the friend and really hold space for that friend. That will encourage the friend to move on herself, right? That's something you need to do to yourself. A lot of Right. people have asked me this question. The biggest pressure is मैं move on नहीं हो पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि प्रेशर है, मूव ऑन होना है। आप प्रेशर देके मूव ऑन नहीं हो सकते हो, आपके सिस्टम को टाइम चाहिए। So allow yourself. There's one affirmation that I have used on my clients who were having the same problem, and you can actually write this down. The affirmation is, I give myself all the time and all the resources that I need to move on. I give myself all the time and all the resources that I need to move on. जब आप खुद को ये बोल रहे हो, आप बहुत प्यार से इस प्रोसेस को हैंडल करो। This is डियर how आई to. रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी नहीं लिखा तो आप दोबारा से सेशन को रीलॉग इन करके सुन के दोबारा से राइट कर सकते हो, अच्छे से चेक कर सकते हो. रुचिका, वी हैव वन थैंक फॉर यू, दैट्स मैसेज इज फॉर. Thank you, Mitali. Thank you so much. ओके, कमिंग बैक टू आवर सेशन. तो अभी व्हाट वी हैव, डू वी वांट टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी और कैसे है? Yes. So I was getting to the activity. So now that we know what emotional freedom actually means,
It's a very Hmm. realistic concept. It's not like, wow, life is free, no problems, dreamy. That's bullshit. Life is real. I'm experiencing everything. Ups and downs भी है, मैं सब कुछ experience करके आगे बढ़ रही हूँ. That is emotional freedom. Now, the first step towards emotional freedom is how to understand your emotions. The very first step. Okay? That is an activity that I want to do with everybody. So all the audience that is watching us, आप हमारे साथ साथ करो, आपको तुरंत से feel होगा कि हाँ, this works. Jasmine, you can also do with me, and I will ask you questions based on how you felt in the activity so that others are also encouraged. ठीक है? Okay. All right. So Jasmine, I'll do this with you one on one. I'm doing it with Jasmine, but audience, I'm doing it with all of you. Okay? So just follow. Jasmine, I don't need pen and paper. You don't have to write Okay. anything. Okay? Yes. Just your presence here. And I want you to pick any one emotion that you experience in your day to day life that is bothering you. So, emotions can be sadness, anger, disappointment, frustration, hatred, guilt, jealousy. These are emotions. तो इन सब इमोशंस में आप कोई भी एक इमोशन आप चूज करो जो आपको बॉदर करती है. Hmm. Frustration, I guess. That's really Okay. bothered me. Frustration bothers you. So the rest of the audience, please pick any one emotion. Okay, do the first step. Now the second step is, now that you know the emotion, that it's frustration, you need to close your eyes and ask your body, where am I feeling this emotion? आपकी बॉडी जवाब देगी. कहीं पे कुछ डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा बॉडी में. So can you do that right now, Jasmine? Okay, let's try. Do it with blankness. If I'm not wrong, it's near to the digestive system. मतलब digestive Where system. exactly? Near your stomach? Yes, near my stomach. Okay. So you experience it near your stomach. If Hmm. I asked you to put your hand over there, आप रख पाओगे ना? Huh. So you know exactly where in the body you are experiencing it, right? Hmm. For the Hmm. audience who's doing it with me, I hope आपको भी पता चल गया answer. You don't need to think the answer, just like Jasmine was doing it for the first time and she looked कि कैसे होगा, but हो गया. You just have to close your eyes and ask your body. Your body never lies. आपका body कभी आपको झूठ नहीं बोलेगा. आपका mind आपको बहुत सारा झूठ बोल सकता है. If you ask your body will show some discomfort somewhere. So just that's step two. Okay. Step one was, what is the emotion? Step two, where in my body am I experiencing it? Step three is the most simple step. What you have to do is, जैसे जैस्मिन आपको स्टमक के पास फील हो रहा है, you know the physical location of it, correct? Hmm. Now what I'm going to ask you to do is, when you breathe in, आप imagine करो कि आप स्टमक के उस हिस्से के अंदर ब्रीद कर रहे हो. Okay. सो लंग्स के बाहर आपका ब्रेथ तो जाएगा नहीं, बट जब आप इमेजिन करते हो कि आपकी ब्रेथ वहां जा रही है, आपका फोकस वहां जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, सो आई वांट यू टू डू दिस 5 times राइट नाउ. Breathe into that space and then breathe out from your mouth 5 times. You can close your eyes and do it, that's even better.
Try and breathe out from your mouth. How was it? What did you experience? There is no right or wrong answer. I'm feeling better actually. मतलब calmness is there. Okay. So when you see you're feeling calmness, how do you know you are feeling calmness? जो डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ थॉट्स होते हैं वो नहीं माइंड में चल रहे होते कि Hmm. लाइक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वो चीज़ें नहीं थी। सो एक Yeah, सेंस मतलब एक रिलैक्सेशन फील होती है माइंड में, वो right. And how does it feel in that stomach area? लाइटर। Lighter? Yeah. So this was the first time you did it, and you're already feeling lighter, right? Now, not everybody may feel the same. किसी के साथ फर्स्ट हिट में हो जाता है, जैसे जैस्मिन के साथ हो गया। किसी को एक बार दो बार ट्राई करना पड़ता है, देन इट हैपेंस। ओके। नाउ, जैस्मिन, कैन यू एक्सप्लेन why this made you calm? If you had to explain what happened, how would you explain it? अब सिंपल है कि लाइक जब हमें पता है कि हमारा एक इमोशन है और जब वो निकल रहा है, अगर हम उसको काम कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं फोकस कर रहे हैं, तो आई गेस डेफिनेटली यू फील रिलैक्सेशन इन योर माइंड, जो मुझे ये लगता है। It's the opposite. हम हाँ, इट्स माय पर्सपेक्टिव, माइट बी समथिंग Yeah, एल्स एज वेल। but good try. I exactly I wanted to know your perspective because then it also gives me an idea what other people's perspectives could be, you know. राइट। It's exactly the opposite. So हमें लगता है कि कोई नेगेटिव इमोशन जैसे फ्रस्ट्रेशन है उस पे ध्यान मत दो, तो अपने आप बेटर फील होगा। बट इमोशंस आपकी लाइफ में क्यों है? इमेजिन आपकी लाइफ में अगर कोई इमोशन ही नहीं है तो आप डेड फील करोगे, है ना? राइट। You remember experiences, you feel alive because you have emotions, you can feel them. नहीं तो आप zombie बन जाओगे, correct? Now just because we know how to handle positive emotions, हमें वो बहुत प्यारे लगते हैं, तो हम उनको और फील करना चाहते हैं। बट क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं नेगेटिव इमोशंस को हैंडल कैसे करना है, हम ऑटोमेटिकली उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि उससे हमें बेटर फील होगा। बट द हम्म। रीजन जैस्मिन फेल्ट बेटर टुडे, the emotion of frustration she felt in her stomach. I did not ask her to not pay attention to the stomach. I asked her to take all the focus in the stomach. In fact, to breathe into that space. Correct? जब आप किसी इमोशन के फिजिकल एरिया में ब्रीद करते हो, आप अपनी अवेयरनेस, अपना अटेंशन को वहां लेके जा रहे हो, बिना जज किए कि मुझे वहां नहीं जाना। हम्म। आपका फ्रस्ट्रेशन आपके स्टमक में है, आप अगर वहाँ पे अपना अटेंशन लेके जा रहे हो, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हो। You are building a connection with it. You are telling that frustration that, hi, I'm here to understand you. I want to meet you. I want to know what's happening because you are inside me. Then what happens? The frustration now will start to feel कि चलो, finally Jasmine is coming to listen to me. अभी तक तो दूर भाग रही थी, चलो अब वो आई है सुनने। जब वो मेरी बात सुन लेगी, मेरा काम हो गया, मैं चला जाऊंगा। So राइट। when Jasmine is practicing this enough to build a relationship with her frustration, to understand where it's coming from, to breathe into it, to connect with it, the work of that frustration is done. Emotions are messengers. They come to give you messages, they are not bad things. If you can learn to listen to those messages by doing this simple activity that Jasmine did, the first thing you will experience is feel calm. And Jasmine, if you practice this every day, even for like 5 minutes, you sit with your frustration, breathe into it, and breathe out. Over a period of time, your frustration will start to tell you that I am here because you need to focus on this thing in your life. You need to do better at this thing in your life. You need to love yourself more in this way. When she's able to do all of that,
The frustration will be gone, the discomfort in the stomach will be gone. Am I making sense, Jasmine? Yes, of So course. you handle negative emotions by meeting them, not by running away from them. You handle financial problems by meeting your financial problems, not by running away from them. So when you want to be emotionally free, the first thing you will have to learn is how to meet difficult emotions. उसको समझो, उसको प्यार करो, उसको भगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मदद करने आया है, वो आपको कुछ बोलने ही आया है। So the Hmm. better you understand, it's like imagine that Jasmine, I'm asking you a question, ठीक है? You wake up tomorrow and आपको जिन इमोशन से डर लगता था, रातों रात मैजिकली वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करने का डर खत्म हो गया, Hmm. ठीक है? Right. आप कैसे होगे नेक्स्ट डे? हाउ विल यू फील द नेक्स्ट? हाउ विल योर लाइफ? I guess much better. व्हाई? क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें गलत कर जाते हो उस इमोशंस के चक्कर में आके। या समटाइम सो यू व्हाट रियली चेंज? लाइक हर्ट योर लव्ड वंस एज़ वेल। मुझे इसी बात पे गुस्सा आ जाता है कई बार कि इफ यू वोंट एबल टू कंट्रोल योर सेंसेस और इमोशंस ना तो कुछ गुस्सा कहीं ना कहीं निकल जाता है, so that is not a good thing. The point is we are trying to control our emotions, जबकि Right. emotions are nothing to be controlled. It's like एक राजा है, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड के एक राजा है और आपका जो माइंड आपको जो चीजें बोलता है, आप उसके राजा हो। नाउ जो इमोशंस हैं वो दूत का काम कर रहे हैं। सो सबकॉन्शियस माइंड के राजा ने एक दूत भेजा आपके कॉन्शियस माइंड को कि ये मैसेज पहुंचा दो। अब क्योंकि वो मैसेज कभी-कभी अच्छा नहीं होता, हमें अच्छा फ़ील नहीं होता, तो हम उस दूत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको पिंजरे में रख देते हैं। बट इज़ दिस द राइट थिंग टू डू? No. दूत का काम है मैसेज देना, आप मैसेज लो, दूत चला जाएगा। उसका और कोई काम है नहीं। So emotions are exactly like that. Don't try to control them. Learn how to experience them with safety. And then your negative emotions will start to guide you. You'll be like, oh, गुस्सा आ रहा है, चलो गुस्से के साथ बैठते हैं, कुछ तो अच्छा होने वाला है आज। So you sit with your anger, and then the anger tells you an amazing message, and you're like, oh wow, I never knew this about me. This is what I'm going to do from now on, and then things change for you in the better way. This is how emotions work. So emotions are there to help you, even the negative or the horrible ones, but they help you. So So I hope okay, this मेरा यहाँ activity पे सबने हाँ, किया मेरा साथ मैं साथ। वही वही चीज़ पे पूछने आ रही हूँ। द एक्टिविटीज़ लाइक सबसे पहले ये चेक करो कि आपका कौन-सा इमोशन आ रहा है। देन उस इमोशन को पकड़ के वी नीड टू फील इट अप कि हमें कहाँ पे वो इमोशन फील हो रहा है हमारी बॉडी में। Yes, देन वी नीड टू डू द डीप ब्रीथिंग वहीं से deep जहाँ पे breathing जिस into पॉइंट that space. Yes, इनटू दैट yes, स्पेस। yeah, सो दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर कौन-कौन से इमोशंस हैं एंड व्हाई इट्स कमिंग। So yes. guys, And if do this anybody, exercise for at least 7 days to understand your body in a better way, I guess. yes, one word of caution. If the emotion is so difficult that the Mm-hmm. moment you breathe into it, you start crying, then you don't have to force yourself to do the whole process. खुद को रुला के जोर जबरदस्ती नहीं करना है। स्टेप बैक। अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ फील हो रहा है, ओके, आप अंदर ब्रीथ कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंसेस ने इतना इंटेंस इमोशन क्रिएट किया है कि आप जैसे वहां ब्रीथ करने जाते हो आप बिखर रहे हो। सो स्टेप बैक। You don't have to do that. All that you can try to do is just breathe up to here. Just touch the surface. Just touch the surface of that body part. Breathe in up kar rahe ho. So imagine that your breath is going only up till here. Don't take it all here. So it's called touching the surface. So then that's Mm-hmm. by going step by step. Surface touch करने के लिए आप ready हो, then you go deep. ठीक है? So this was the word of caution. And if anybody in the audience was doing it with us, please put in the chat box what was your experience, what did you learn, what did Right, you realize. Even if it didn't work for you, please write because that's completely okay. It does not work for everybody the same way. right. So Ruchika, now we have a question. So let's take it now.
Emotional Kumar freedom. Vishwas. He's a Kumar Hindi Vishwas US. has a question. Okay, I'll read it out. क्या भावात्मक स्वतंत्रता आपके जीवन में महत्वपूर्ण है? So कुमार जी, thank you for this question. आप ये क्वेश्चन खुद से पूछ रहे हो या हमें पूछ रहे हो? आप पहले हमें वो बताओ. Okay, next is from Grow Up. How do you strive for emotional freedom in your daily life? Excellent question. So, grow up. I'm calling you by this name because I don't know what your real name is. The activity that I did is the most powerful activity that I've done for myself and for my clients for the last 6 years to help them get a taste of what is emotional freedom. ये कंसिस्टेंसी के ऊपर है. आप कितना कंसिस्टेंटली इसे फॉलो करते हो डे टू डे लाइफ. How do you apply it is day to day, whatever emotional discomfort you feel, just sit with it for 5 minutes, breathe into it. That's it. आपको अपने आप मैसेजेस आएंगे कि अच्छा ये हो रहा है मेरे अंदर. This is one Hmm. thing. This practice has helped me. One of the practices, but not just this. बहुत कुछ किया था मैंने. This was one of the many important activities that I did for myself when I was experiencing depression and anxiety. And even though I am a therapist, मैं भी इंसान हूँ, I also feel bad sometimes. I also have my bad days. But the first thing that I still do is this that I taught you today. It really brings me centered, calm. It brings a lot of clarity कि मैं जो feel कर रही हूँ वो actually क्या है, क्या feel हो रहा है, क्यों feel हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ. ठीक है. दूसरी चीज, ग्रो अप जो आप कर सकते हो is be brutally honest with yourself. अगर आपको किसी सिचुएशन में अच्छा नहीं लग रहा और आप खुद को झूठ बोल रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं मुझे अच्छा ही लग रहा है, आप एडजस्ट करने की ही कोशिश कर रहे हो, आप बेटर फील करने की कोशिश कर रहे हो, बट आर यू बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट? नो. You need to be honest with yourself that yes, I am not feeling good about this. You are able to experience emotional freedom when you are brutally honest with yourself. In fact, 4 years ago, I made a promise to myself कि आज के बाद मैं खुद से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी. उससे मुझे इतना बेनिफिट हुआ, I can't explain. So try this, grow up. These two things I have explained. One is the activity, one is be honest with yourself. खुद से झूठ कभी मत बोलो. ये दो चीजें आप करो, आपकी जर्नी टुवर्ड्स इमोशनल फ्रीडम आप शुरू कर रहे हो फिर. Thank I hope I you. answered the question well. हाँ मिताली, एक बात बता, हाउ कैन यू कोप विद पास्ट इमोशनल ट्रॉमास टू रिगेन इमोशनल फ्रीडम? ओके. So when it comes to trauma, Mitali, trauma can be a very sensitive issue to discuss on a platform like this. So मैं आपसे कुछ सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि बहुत पर्सनल होता है. But coping with trauma, अगर वो किसी, there is a small t trauma and there is a big T trauma. Small t trauma is हमें पता है कि something is really bothering us, something has happened. Big T trauma is something so severe happened that you can't. It's very difficult for you to process that emotion. If it is a big T trauma that you're talking about, then it's best to take the guidance of a trauma informed therapist who is ready to work with you. If it is a small t trauma, the steps you can take, number one, जब आप किसी ट्रॉमा से डील करने की कोशिश कर रहे हो, you need to make yourself feel safe. अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, आप उस एक्सपीरियंस को, उस इमोशनल ट्रॉमा पेन को प्रोसेस नहीं कर पाओगे. व्हाट मेक्स यू फील सेफ? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. सेफ्टी मतलब आप कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर फील करते हो, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी. What makes you feel safe? It can be talking to a friend, it can be talking to a therapist, it can be sitting with your cup of tea and just having every sip, it can be having a glass of water, it can be anything. You need to find a safe space for you first. That's the most important thing when it comes to trauma. The second thing about trauma is, so trauma is not something जो आप self help करके खुद से करते हो.
मेरी लाइफ का जो ट्रॉमा था वो भी मैंने खुद से ही सब कुछ नहीं किया है. My therapist helped me out first, then certain trainings that I did, which helped me to process my trauma, but which also taught me how to process my own trauma क्योंकि मैंने वो पूरी ट्रेनिंग करी थी. So trauma is not really a self-help thing, but some basics that you can keep in mind is number one safety जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. Number two, वो ट्रॉमा के अंदर आपको क्या फील हो रहा है. What are you really feeling about it? Right? One way is to journal. आप जर्नल करो. आप लैपटॉप में टाइप करके जर्नल करो या पेन से जर्नल करो. You don't write about what happened, but you write about what you are feeling. Because the minute you start writing that story, आप लिखते चले जाओगे, it will not help. But when you start describing your feelings, your emotion is out there, then you will feel a release. Okay. The third thing, I'll tell you two more things. The third thing that you can do is practice mindfulness. Now, mindfulness has to be done for people who have experienced trauma in a more sensitive way. It has to be extremely balanced for you. I also do a mindfulness program, and if you feel that you might need something like that, you can connect with me later. The fourth thing is something called emotional freedom technique. इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज अ टैपिंग मेथड जो मैंने सीखा है. आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेशन, बट आई इंक्लूड दैट इन बिट्स एंड पार्ट्स इन माय सेशंस. जब आप ईएफटी करते हो तो आप जो इमोशन फील कर रहे हो, टैप कर करके वो इमोशनल एनर्जी पहले मूव होने लगती है क्योंकि वो आपके सिस्टम में स्टक थी. व्हेन इट स्टार्ट्स टू मूव आपको इमोशनल फील होगा. आप शायद रोओगे, आप शायद वॉशरूम जाना चाहोगे, आप यॉन करोगे, बट समथिंग विल रिलीज. Slowly over a period of time, that emotional energy is out. The emotion will let go of you. You don't have to let go of that emotion. That's how it works. Okay. So these are some basic things that I've told you, Mitali. If you are somebody who has experienced trauma, like many of us, and if you want to explore this with a therapist, and if you feel I'm the right person who can help you, you can also connect with me. You can also connect with any other trauma informed therapist who you can trust. But trauma के लिए ये basic चीजें plus good therapy is essential. Don't try to do it all by yourself. Okay, take help, take the support you need. I hope I resolved your queries, Mitali. Nikita Bhatt, tips to balance emotional freedom with the expectations and demands of others. Okay. I'm going to ask this question to Jasmine. निकिता के साथ डायरेक्टली बात हो पाएगी कि नहीं वो डिफिकल्ट होगा मैसेजेस पे. बट I will be जैस्मिन your का पर्सपेक्टिव helping hand, I guess. जानना चाहती हूँ. जैस्मिन, आर अदर्स अलाउड टू डिमांड फ्रॉम यू और एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? Um, आर दे अलाउड? I guess no. If I allow them, then only they can. They can नहीं, have बट इन द expectation फर्स्ट from my प्लेस side, but they can't demand. Actually, वो आप कर रहे हो ना. यू आर पुटिंग दैट बाउंड्री, बट आर दे अलाउड इन देयर ओन राइट? Are they allowed to think that they expect something from you? Yes ना. If I expect yes, कि जैस्मिन, उनके माइंड में एक्सपेक्टेशन होना अलाउड है ना, वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. yes, उनके that we माइंड can't. में डिमांड होना अलाउड है, वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. Which means others' expectations and demands from you are always going to be there. No matter what you are, what you do, who you are. उनके माइंड में उनकी एक्सपेक्टेशंस डिमांड्स रहेंगे और वो कम्युनिकेट भी करेंगे आपको बहुत बार. आर दे अलाउड टू डू दैट? यस. You can't tell people, look, stop, don't even talk to me. नहीं हो सकता है ना. But how are you responding to their expectations and demands? आप अपनी बाउंड्री कहाँ पे सेट करते हो? बाउंड्री सेटिंग तब इजी होती है, ना बोलना तब इजी होता है जब किसी की एक्सपेक्टेशंस आपको ट्रिगर ना करें. Then you are neutral about it. That look, this is your expectation, but I'm sorry, I can't do this, so I will take a step back. आप देख लो. बट अगर आप ट्रिगर्ड हो, देन ओ माय गॉड, वो मेरे से इतना एक्सपेक्ट कर रही है, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? यू आर ट्रिगर्ड. सो द बॉल इज इन हुज कोर्ट. बॉल आपके कोर्ट में ना, क्योंकि आप अगर ट्रिगर्ड हो तो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो. आप ट्रिगर्ड नहीं हो तो आप हैंडल कर पा रहे हो. सो हु हैज द पावर? यू हैव द पावर.
सामने वाला जो कर रहा है वो कर रहा है, वो हमेशा करेगा. Why should people change for you? But how are you handling your triggers is important. So, Nikita, a good question for you to ask yourself that when others have expectations and demands from you, number one, what do you feel? How does that make you feel? Number two, whatever you are feeling, if there is a belief, a limiting belief that creates that feeling for you. Limiting beliefs can be I should not say no to people because then they won't like me. I always have to be there for people. I always have to help people. ये limiting beliefs होते हैं. So you need to ask yourself अगर आपका कोई limiting belief है. And then you need to ask yourself कि ये limiting belief है या सच्चाई है? Is it like a universal truth? And you will know the answer that it's not a universal truth. It's your limiting belief that's creating this emotion जिसके कारण आप दूसरों की expectations handle नहीं कर पा रहे हो. जब आपको इतना समझ में आ जाएगा 50% ऑफ योर वर्क इज डन. तब नेक्स्ट टाइम आप ट्रिगर होगे, आपको पता होगा कि आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के कारण ट्रिगर क्यों हो. क्यों? क्योंकि मेरी बिलीफ के कारण मैं ट्रिगर कर रही हूँ. सो व्हाट कैन आई डू टू चेंज माय बिलीफ नाउ? You need to ask yourself this question. In therapy, this is done in a more deeper way. We go into the root cause, but to just give you an idea of how you can do it yourself, this is how it works. Nikita, I hope this is helping you. Uh, Try this and let us know how it works for you. Do we have any more questions, Jasmine? Uh, yes, we have one question from Chahat Singh. Just a minute. Okay. Grow up, I can understand you have a professional commitment there. So thank you for joining. But we will take last one or two questions. जो भी हैं, One then we question, will wrap last one question. Yeah. up. Yes. How do you handle negative emotions to maintain emotional freedom? I think I spoke about it in detail today, but let me summarize it for you. The first thing to handle negative emotion is to understand that when you are using the word negative emotion, आप उस चीज को नेगेटिव बना रहे हो. आप उस चीज पे एक लेबल लगा रहे हो कि ये नेगेटिव है. सबसे पहले you have to tell yourself that it can be an emotion that I don't know how to handle. That's why I am calling it negative. Okay? That's the first step. What more you can do here is to the activity that I did, I would like you to watch a replay. Keep that negative emotion in mind and do that activity as you watch the replay. It will really give you some clear idea. All right? And तीसरी चीज जो आप कर सकते हो एज अ प्रिंसिपल एज अ थंब रूल इन लाइफ इज टू ट्राई टू कनेक्ट विथ योर नेगेटिव इमोशंस. दैट्स द बेस्ट वे टू हैंडल दैट. अगर कोई छोटा बच्चा आपके पास आके रो रहा है, आप उससे दूर तो नहीं भागोगे ना. छोटा बच्चा आपके पास आया, वो गुस्से में है, वो दुखी है, आप उससे दूर तो नहीं भागोगे कि चला जा तू नेगेटिव है. नहीं. यू विल कम टू द चाइल्ड, यू विल आस्क कि क्या हुआ, टेल मी, आई एम हियर फॉर यू, आई विल लिसन टू यू, आई लव यू. देन द चाइल्ड विल फील कंफर्टेबल एंड द चाइल्ड विल टेल यू. और आपने उसकी बात अच्छे से सुन ली, वो बच्चा ऐसे ही ठीक हो जाता है. इमोशंस आर लाइक दैट. यू हैव टू लर्न टू लिसन टू देम. When they feel that you have listened, उनका काम हो गया है. They will automatically leave. This is how you handle negative emotions. And tell yourself one affirmation, one more affirmation, that it is okay for me to feel this emotion. मैंने बहुत Yes. बार किया है when I was experiencing depression. जितना मैं उससे भागी उतना मुझे और दिक्कत हुआ. But the day I told myself that okay, what am I feeling right now? Okay, I'm feeling sad. I'm feeling intensely sad. I just kept telling myself, hi, sadness, I'm here. It's okay for me to feel sad. It's absolutely okay. It's absolutely natural for me to feel sad. धीरे धीरे ये बोलते बोलते वो जो सैडनेस जो इतना बड़ा लग रहा था वो इतना छोटा लगने लग गया. और देन यू डोंट किक इट आउट, यू जस्ट पुट इट, यू नो, असाइड. यू आर हियर, आई नो, यहीं पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत नॉर्मल हो, यहीं पे Right. रहो. So then the sadness will stop knocking your door all the time because you paid attention to it. So this is how you handle negative emotions. I hope I answered your question. And Chahat, there is one message for you dear. आपने सचिन भैया का सेशन मिस किया है. That was he is the person who will help you out for your sales part.
प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट दैट सेशन. और जो आपने हमें फॉर्म में अपना नंबर दिया है, दैट नंबर इज़ नॉट वर्किंग, सो वी कुड नॉट कनेक्ट विद यू. सो दैट्स ऑल फॉर, बिकॉज आप आज काफ़ी दिनों के बाद कनेक्ट हुए, आई थॉट दैट आई पास दिस मैसेज. So, guys, Ruchika has some other commitments as well. तो कैन मैं आप सब लोग के क्वेश्चन रुचिका को पास कर दूंगी एंड विल डेफिनेटली पोस्ट आंसर्स इन अ कमेंट सेक्शन. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिए. राइट, आई होप रुचिका दैट विल बी फाइन बिकॉज That यू will be हैव fine. टू गो, है ना. सो वी आर रियली अपोलोजाइज बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम. हम लोग अभी आगे के क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई टू पिंग यू ऑन द चैट बॉक्स. आप लोग चैट बॉक्स चेक कर लीजिए, थोड़े टाइम में यू विल गेट द आंसर्स. Yeah. राइट. So thank you once again for joining. And yes, as Grow Up has said कि हम लोग अभी alternative days पे मिल सकते हैं क्या. So from this week onwards we are coming live on alternative days. तो हम लोग आपको regular नहीं मिल पाएंगे. We will come live only 3 days a week. So I hope you will enjoy all these sessions. Right. Thank you so much, Ruchika, for joining us and adding so much value to our session. It's been really amazing to know about कि emotional हमें जो feel करते हैं उनको सिर्फ feel नहीं करना, उनसे भागना नहीं, उनको feel करके उनको sort करना है, सुनना है कि वो problems क्यों आ रही है. So really thank you so much for adding value, and thank you so much audience for coming up and ठीक है. So thank you everyone. Thank you. Thank you for having me here. And thank you, audience, for being so open in receiving the kind of questions you all have asked. Were excellent questions which showed that you were paying attention. I hope you were able to absorb what you learned here. Do try and practice that. If you feel that there's something that you need to overcome and process with a therapist, you can connect with me and then we'll go on for a discovery call, which is not chargeable. And I loved having everybody today. Thank you, Jasmine, for being an excellent host. Thank you. Actually, Ruchika, if you can spare only 2 minutes before 1 minute, if we can wrap up Okay. the session meanwhile, because he's our regular person, he's attending the session on regular basis. So I just want to add value How because does self everybody is there, but I really may wish कि मैं सबके answers अभी दे नहीं पाऊंगी because session go beyond. So we really request Yeah. you कि please comment section पे wait करिए. We will definitely comment it out. Okay. So I'll take this one last question from Astik Sharma. Hmm. Okay. How does self awareness contribute to emotional freedom? आप अगर इमोशनली लेट मी गिव यू एन एनालॉजी विद फाइनेंशियल फ्रीडम. आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो लेकिन आपको फाइनेंसेस की समझ नहीं है. कैसे होगा? नहीं होगा ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल गेन्स कैसे करना है. फाइनेंशियल सेटबैक भी आएगा तो उसको ओवरकम कैसे करना है. कहाँ कितना फोकस करना है, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना है. करेक्ट. व्हेन इट कम्स टू इमोशनल फ्रीडम, सेल्फ अवेयरनेस इज दैट एग्जैक्ट सेम थिंग. आप खुद को जितना जानोगे उतना ही आप अपने इमोशंस को अच्छा जानोगे. People who are self aware are extremely aware of how they are feeling. Hmm. And this can be cultivated. That's the best part. It can be practiced. जैसे आप फाइनेंसेस सीख सकते हो वैसे आप इमोशंस को हैंडल Right. करना, सेल्फ अवेयर होना भी सीख सकते हो. So self awareness is the huge part of emotional freedom aspect. Very good question. जितना आप सेल्फ अवेयर होगे उतना ही आप इमोशनल फ्रीडम एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी होगे धीरे धीरे. थैंक यू Right. फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. So thank you everyone with this thing. So Kumar sir, Tanisha, we will definitely add your answers in a comment section. Please do check after some time. Thank you so much. Thank you Ruchika once again. Love you all. Bye bye.